हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 9 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज ऑन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट MCQs। ये MCQs शॉर्टलिस्टेड हैं, हमने गेट एग्जाम और PMP एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली आपके लिए तैयार किए हैं। सो हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब, जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप तक ये टॉपिक पहुंचाया जाएगा। सो पार्ट 9 of our ongoing video series, Construction Management. Question number 201. A PERT network has three activities on critical path with mean time 3, 8, and 6, and standard deviation 1, 2, and 2 respectively. The probability that the project will be completed in 20 days is option A 0.5, option B 0.6, option C 0.84, option D 0.95. So B is the correct option. The probability कि project complete होगा 20 दिन के अंदर is 60%, 0.6. 202. The network rules are common to all activity on arrow networking system. The use of computers for making computations may improve certain rules. Which of the following basic rule of network logic are correct? Option A. Before an activity may begin, all activities preceding it may be completed. Option B. Any two events may be directly connected by not more than one activity. Option C. The event numbers must not be duplicated in a network. D. All of the above. तो ये तमाम options जो हैं वो correct हैं, इसलिए option D is the correct answer for this question. 203. PERT is applied for long time range planning. Option A is right, option B is wrong. Yes, PERT जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 204. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी? ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव. सो ये तमाम जो है फाउंडेशंस, रूफ स्ट्रक्चर्स, वॉल्स एक्सेट्रा, ये तमाम बिल्डिंग की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं. देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 205. क्रिटिकल पाथ नेटवर्क helps an engineer, option A, to concentrate his attention on critical activities, option B, to divert the resources from non-critical advanced activity to critical activities, option C, to be cautious for avoiding any delay in the critical activities, to avoid delay of the whole project, option D, all of the above. So क्रिटिकल पाथ नेटवर्क में क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं इंजीनियर्स क्रिटिकल पाथ नेटवर्क के जरिए, और रिसोर्सेज को आप डाइवर्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई एक्टिविटीज ऑलरेडी अहेड ऑफ स्केड्यूल चल रही हैं, तो उनसे आप रिसोर्सेज को निकाल के जो डिलेड एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं. वो आपको इसी क्रिटिकल पाथ नेटवर्क के थ्रू ही पता चलता है. और तीसरा, आप अवॉइड कर सकते हैं डिलेज को, उन क्रिटिकल एक्टिविटीज के डिलेज को जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर हैं, ताकि आपको पता है कि अगर क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं वो डिले होंगी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिले होगा. सो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. 206. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट? Option A 1. An activity is in between two node numbers which need not to be in an increasing order in the activity progress sequence. Option 2. The length of the arrow in a network has certain significance. Option 3. Concurrent activities are mutually independent and can possibly be taken up simultaneously. Options available with us are 1 only, 3 only, 2 only, 1, 2, and 3. So 3 only is the correct option. Concurrent activities are mutually independent and can possibly be taken up simultaneously. So 3 जो है वो correct option है. 207. Which one of the following is relevant to activity on node AON? Option A, dummy activities may be many. Option B, there will be no dummy activities. Option C, it is used for quite complex projects. It is easier to associate with time flow of activities. So B is the correct option. There are no dummy activities. 208. Which system of network given below completely eliminates the use of dummy activities? Option A, AOA activity on arrow, AON activity on node, PERT और CPM. So AON जो सिस्टम है उसमें डमी एक्टिविटीज नहीं होती. So B is the correct option. Which of the following represents an events? Option A, concrete cured. Option B, fixing of door. C, plastering of wall.
Selecting sites. A is an event. Complete cured. 210. Pick up the incorrect statement from the following. Option A. The various functions under each activity are shown by one bar on bar charts. Option B. Bar chart established the indeterminacy of one event on another. Option C. Only approximate percentage of completed work is reported. Option D. None of the above. So B जो है वो correct option है. The bar chart establishes the indeterminacy of one event on the other. B is the correct option. 211. Gantt chart indicates option A. Comparison of actual progress with the scheduled progress. Option B. Balance of work to be done. C. Progressive cost of work. D. Inventory cost. So C is the correct option. Progressive cost of work. Gantt chart जो है वो progressive costs of works जो है. 212. A serious limitation of interdependencies between various activities is generally observed in option A. Bar charts. Option B. Milestone charts. Option C. Network analysis. Option D. Job layouts. So A जो है वो correct option है bar charts. 213. A construction schedule is prepared after collecting option A. Number of operations. B. Output of labor and machinery. C. Quantity of various items. D. All of the above. Construction schedule है जो है वो prepare होता है इन तमाम चीजों को शो करने के लिए, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लेबर और मशीनरी की आउटपुट के लिए और क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स या एक्टिविटीज की क्वांटिटीज को शो करने के लिए. सो ये तमाम ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है. डी all of the above is the correct answer. 214. Crashing a project in terms of its duration would result in number 1 an increase in indirect cost, number 2 a decrease in indirect cost, 3 a decrease in the direct cost, 4 an increase in the direct cost. Which of these statement is correct? A. 1 and 4 are correct. B. 2 and 3 are correct. C. 1 and 3 are correct. D. 2 and 4 are correct. So D जो है वो 2 and 4 are correct जो है वो correct answer है. अब 2 पे है a decrease in the indirect cost and increase in the direct cost. So crashing of the project, जब project कोई crash होगा in terms of its duration या delay होगा, so उसकी decrease होगा indirect cost और increase होगी उसकी direct cost. 215. In the time cost optimization using CPM method for network analysis, the crashing of the activities along the critical path is done starting with the activity having option A. Longest duration, B. Highest cost slope, C. Least cost slope, D. Shortest duration. So C is the correct option. In time cost optimization using CPM method for network analysis, the crashing of activities along the critical path is done starting the activity having least cost slope. C is the correct option. 216. The optimization duration is the option A. Summation of normal duration of each activity in the project. Summation of normal duration of activities on critical path. C. 1 which gives the minimum total cost for completing the project. D. Summation of crash time of activities on critical path. So C जो है वो correct option है. 1 which gives the minimum total cost for completing the project. 217. Which one of the following is correct sequence to analyze a project for implementation? Option A. Time cost study, network, work breakdown structure, scheduling and resource allocation. Option B. Network, time cost studies, scheduling and resource allocation. Then WBS. First of all, WBS, network, scheduling with resource allocation, time cost study. D is WBS, time cost study, networking, scheduling with resource allocation. So C जो है वो correct option है project के लिए. WBS, network, scheduling with resource allocation, time cost study जो है वो end के ऊपर किया जाता है. 2118. Which one of the following is objective in crashing? Option A. Reduction in duration, reduction in resources, reduction in cost, reduction in project size. So A जो है reduction in duration is the correct option. In a construction period, the cost slope of an activity is an indication of option A. Extra time needed, option B. Extra cost needed, C. Reduction of duration of critical activity, D. Crashing of an activity.
So extra cost needed, B is the correct option. 220. In resource leveling, total duration of project is reduced, total duration of project is increased, uniform demand of resources is achieved, cost of project is controlled. Resource leveling के अंदर total duration of project जो है वो increase होती है. B is the correct option. 221. Which of the following is the base for resource leveling? Option A, delaying the completion of critical activities, delaying the start of non-critical activities, reducing completion time of critical activities, not delaying the completion of critical activities. So resource leveling की जो base है वो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को आपने डिले करना है उनका स्टार्ट. व्हाट इज द प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीस्केड्यूलिंग और रीप्लानिंग कॉल्ड? ऑप्शन ए, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स स्मूथिंग, रिसोर्स लेवलिंग, डी अपडेटिंग. सो वो प्रोसेस जिसमें चेंजेस और स्केड्यूलिंग या रीप्लानिंग की जाती है उसको अपडेटिंग, स्केड्यूल को अपडेट करना कहलाता है. 3. अपडेटिंग may result in option A, change of critical path, decrease of project completion time, increase of project completion time, D all of the above. So ये तमाम चीजें अपडेटिंग में की जाती हैं. क्रिटिकल पाथ को चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को डिक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 224. द टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम इज कॉल्ड. ऑप्शन ए, क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम. सो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, नॉर्मल टाइम. नॉर्मल टाइम वो टाइम होता है जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम, रिड्यूस नहीं होती. 225. द कंस्ट्रेंट्स इन विच द रिसोर्स स्मूथनिंग operation would be. Option A, resources, B, project duration time, C, both resources and project duration time, D, none of the above. So smoothing में project duration time, B is the correct option. ये constraint होता है smoothing का. So friends, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने MCQs 201 से 225 तक आपके साथ डिस्कस किए. आई होप आपने इनसे काफी लर्निंग हासिल की होगी. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. हम अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर भी, वहां पे भी हमें फॉलो करें. फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेजेस को लाइक करें. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.